Hi everyone, in this video I'm going to share a very different and yummy fried rice recipe. I hope you guys will like it. सबसे पहले हम दूध में फूड कलर ऐड करेंगे, येलो फूड कलर है, इसको मिक्स कर लेंगे। एक बाउल में हम एग्स ब्रेक करेंगे। I'm using 2 eggs. Add chopped cabbage. अब जो कलर हमने मिक्स किया था वो ऐड कर लेंगे। Now mix it well. Add oil. Add egg mixture. Add boiled rice. अब हम इनको अच्छे से कुक करेंगे। Add some spring onion. Add salt. Add sesame seeds. फ्लेम स्टोव का जो है वो आपने मीडियम रखना है। Add white pepper. अब हम इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। Add oil. Add onions. Chopped onions हैं क्यूब्स में। इनको 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद हम इनमें सॉसेजेस ऐड करेंगे। Add salt. Add green chilies. Add black pepper. Add chili sauce. Add soya sauce. Add some parsley. इनको राइस के साथ हमने मिक्स नहीं करना है, इसको भी राइस के ऊपर हम सर्व कर देंगे लाइक दिस। Now add some mayonnaise. It's done. I hope you guys will like it. Give me your feedback in comment box. For more videos, please subscribe my channel. Thanks for watching the video. Bye.